और एक क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्विज में हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एक क्विज सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो चलिए क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो 11-12 में पढ़ते हैं और फ्यूचर में IT या कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग उनके साथ इस क्विज को शेयर कीजिए। या फिर बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, तो आप लोग इनको शेयर कीजिए। उन लोगों को एक बेसिक नॉलेज गेन हो जाएगा, उसके साथ साथ उन लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। तो चलिए आप क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्विज में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक डिटेल्स अपने फिलअप करने पड़ेंगे, जैसे अपने ईमेल ID, उसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्कूल या कॉलेज जहाँ पे पढ़ते हैं उसका नेम, मोबाइल नंबर कुछ भी दीजिए क्योंकि वेरीफाई नहीं होगा, अपना नेम, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अब आंसर शेयर कर देता हूँ। तो नंबर 1 का आंसर आएगा फास्ट स्टार्टअप, able to host multiple VMS on a single machine, and virtual machine can obtain an instruction set architecture that differs from real computers. Number 2, इसका आंसर आएगा is a distribution model in which a third party provider hosts application and makes them accessible to consumers over the internet. Number 3, इसका आंसर आएगा इट इज़ एन आइसोलेटेड प्रोसेस रनिंग इन इट्स ओन नेम स्पेस। नंबर 4, इसका आंसर आएगा फास्ट स्टार्टअप मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस एंड दे आर पोर्टेबल। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आएगा ए कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट to let the developers build apps and services over the internet. Next, इसका आंसर आएगा machine learning is an application of artificial intelligence that provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being especially programmed. Next, इसका आंसर आएगा Amazon AWS, Google Cloud and Microsoft. Next, इसका आंसर आएगा Apache Hadoop and Apache Spark. Next, इसका आंसर आएगा a form of cloud computing that provides for virtualized computing resources over the internet itself. Next, इसका आंसर आएगा multitude of services available for development, distributed technologies and computational and storage needs available all around the world. Next, इसका आंसर आएगा Kubernetes and Apache Mesos. Next, इसका आंसर आएगा increases capital expenses and reduces operational expenses. Next, इसका आंसर आएगा Google TensorFlow and PyTorch. Next, इसका आंसर आएगा a virtual machine is a virtual environment that functions as a virtual computer system with its own CPU, memory, network, interface and storage. Next, इसका आंसर आएगा all of the above. तो अभी क्या आप सारे जॉब को देख लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद ही सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो स्टेयर चूज कर लेते हैं हम। तो मैं आप लोगों के साथ स्कोर शेयर कर देता हूँ। अगर कुछ गलती हुई है आप लोग उनको सही कर लीजिए, तो आप लोगों को फुल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो देखिए 15 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले, मतलब सारे के सारे जवाब सही है। आप 24 से 48 आवर तक वेट कीजिए, उसके अंदर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट अपने मेल ID पे इशू हो जाएगा। तो बस इस क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो में इतना तक ही है। आप इस क्विज से पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और मिलते हैं आप लोगों के लिए और एक नया क्विज सर्टिफिकेशन के वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।